Yesterday we were discussing about the vertebra. कल हम vertebra की बात कर रहे थे. So in the cervical region there are 7 vertebra that we know. हमारी गर्दन में 7 vertebrae होती हैं. Right? So yesterday we have discussed that C1 and C2, they are the upper cervical vertebrae. ये हमारी upper cervical vertebrae है, C1 and C2. And C3 to C7 are the lower cervical vertebrae. A typical vertebra C1, C2 and C7 we already understood yesterday. कल हम समझ चुके हैं. यानी जो थोड़ी हटके होती है. C1, C2, C7 are the atypical vertebra and remaining C3 to C6 are typical vertebra. कल हम ये बात कर चुके. Then the first vertebra का नाम क्या है? The first vertebra is called atlas. We can see in this image. ये पहली vertebra का नाम क्या है? Atlas. C1 और atlas. ये this is the first vertebra. C1 और atlas. We can see all the structure are visible here. इसमें सारे structure दिखाई दे रहे हैं. We can see here, this is the spinous process, transverse process, foramina. This is the bigger foramina. We can see this is the area to make the joints with the upper vertebra. ये upper vertebra से joint बनाने का area, that is called facet. They are making facet joint, right? So here the main focus, the C1 is means atlas. So we can see C1 is the atlas. ये uppermost vertebra है. ये atlas है. Now if you see how the C2, the odontate process of the C2 is coming up, C2 का odontate process ऊपर आ रहा है. So this is the C1 atlas and it's making the joint with the occiput. ये हमारा occiput है. Occiput का सबसे निचला भाग हमारे C1 से joint बनाएगा. So both together are making the joint. Here we can see in this image. So this lowermost part of the occiput and the uppermost part of this vertebra together making the joint. This joint is called atlanto-occipital joint. इसे हम क्या कहते हैं? Atlas, the joint made it in between atlas and occiput. Atlanto-occipital joint. ये हमने कल समझ लिया. Then we already have discussed the cervical vertebra or the bifid. ये सारे structure we already have seen. Vertebral foramina, transverse foramina, lamina, pedicle हमने कल देख लिया. Yes, we have seen already, right? So we seen already the bifid spinous process. This is the bigger foramina, vertebral foramina, vertebra के अंदर पाए जाने वाला foramina. And this is the body. This is the body. This is the transverse foramina. Now we can see the spinous process is connecting with the lamina. ये lamina के माध्यम से connected है. Spinous process is having connection through the lamina.
and the body is having connection through the pedicle. अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो कल का वीडियो देखिए. So we are coming here. चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं. दिस इज द अवर वर्टिब्रा. ये हमारी वर्टिब्रा है. कौन सी वर्टिब्रा है? सर्वाइकल है, लंबर है कि थोरेसिक है? बताइए. ये कौन सी वर्टिब्रा थी? आई विल शो यू वंस अगेन. cervical vertebra, thoracic vertebra, lumbar vertebra, definitely cervical vertebra because it is bifid. ये bifid है, तो bifid होगी तो cervical ही होगी. cervical ही bifid होती है सिर्फ. Only the cervical is bifid. Other vertebra are not bifid. So we can see this is the vertebra. This is the spinous process. ये हमारा bifid spinous process है. Then we can see this is the body. ये बड़ी body है. This is the vertebral body. Now see the main vertebral foramina. ये क्या है? This is the vertebral foramina. Let's make with the red color. Vertebral foramina. Now what is that? This is the spinal cord in between the vertebral foramina. ये क्या है? This is the spinal cord. So spinal cord are passing through the vertebral foramen. Spinal cord is protected through the vertebra. तो वर्टिब्रा की जो बाउंड्री है वो क्यों है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट बनाए रखने के लिए. So there is a vertebral foramina here. We can see here. Inside this is the spinal cord. ये है हमारी spinal cord. The lots of nerve are coming out. कई सारी नर्व निकल रही हैं बाहर. So now we understood what is the purpose of vertebral foramina. The purpose of vertebral foramina to protect the spinal cord. Right? So here the main thing I want to tell you here. This is the anterior part. ये आगे का भाग है. And this is the posterior part. This is the ये पीछे का भाग है. When you look at the spine, we can see this is the part who is in the posterior side, on the back side, जो पीछे की ओर है. If you look at this image, you can see on the back side there is a spinous process. ये पीछे की ओर क्या है? ये spinous process है. On the back side, we can see this is the spinous process. पीछे की ओर क्या है? Spinous process है. And the front side भी है vertebral body. आगे की ओर क्या है? Vertebral body है. In the anterior side we have vertebral body. So look at in this image. The back side is the spinous process and the front side is the vertebral body. Okay, fine. So now we are coming to the next step. We'll look at here. So there are too many nerves coming from the spinal cord. अब हमारी ये जो सारी नर्व आपको दिख रही है ना, ये सब नर्व उसी स्पाइनल कॉर्ड में से निकल के आ रही है. So the entire body is the having network of the entire body having network of the nerves. These all nerves coming from which part? These all nerves coming from the spinal cord. Let's see once again this image. एक बार फिर से image देखिएगा. So in the center of this vertebra, we can see this is the spinal cord. This is the anterior part, and this one is the posterior part. And
some nerve going to the anterior part, some nerve going to the posterior part. कुछ नर्व आगे आ रही हैं, कुछ नर्व पीछे जा रही हैं, राइट? तो some nerve coming anterior, some nerve coming posterior. Anterior and posterior, the two nerves are coming from the spinal cord. Okay. And these nerves are taking exit here. We can see these nerves are coming here. But when we see all nerve together, जब सारे nerve को हम एक साथ देखें, it look like this. These nerves are going everywhere. These nerves are called peripheral nerve. इन्हें हम क्या कहते हैं? Peripheral nerve कहते हैं. So some person is having pain here, 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 anywhere. This might be due to the problem in the spinal cord. ये spinal cord में problem के कारण हो सकता है because the entire body having network of the nerve which is coming from the spinal cord. Now we can see even in the front part. अगर आगे की ओर देखें तो भी, whether we talk about the chest cavity or we talk about the abdominal cavity or the reproductive canal, reproductive area or the legs, all nerves are coming from there only. सारी नर्व वहीं से निकल कर आ रही हैं. कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से, राइट? So let's see this. Look at this, how the nerve is coming out, taking exit. These all are nerves, the network of nerves coming from where? Coming from the vertebral column through from the spinal cord. इसीलिए इतनी व्यवस्था है. There is a disc, there is a foramina. So there should not be any compression. कहीं भी कोई compression नहीं होना चाहिए. If any compression happening anywhere, it will be creating the problems. ये problem create करेगा. So we can see these nerves are coming, taking the exit from here, right? So the entire body having network. So look at here. Suppose these nerves are coming out from the sacrum. ये यहाँ से sacrum से निकल रही हैं. So these nerves together will make the sciatica nerve. So many person having sciatica nerve problem, but the nerve are coming out from the spine, but pain is happening in the legs. Sometimes there is a compression in the lower back. So let's see here. If you look at this image, आप देखिए, why the people nowadays getting too much pain due to degeneration of the disc. जब disc का degeneration हो जाता है. So this is the upper vertebra, एक ऊपर की vertebra है. This is the lower vertebra. In between we have disc. Now there is a degeneration of the disc. Then this nerve will get compressed. ये nerve compressed हो जाएगी. Yes. So now again we are looking the body. See, this is the front part. We can see where is the front part. This is the front part. ये हमारा front part है, anterior part, or it is called anterior part, or it is called ventral part. And this is the back part, or the posterior part, or the dorsal part. ये पीछे का भाग है. Okay. Now, each and every body is very much aligned. We can see all the body are very much aligned. सारी की सारी body fully aligned है.
एंड देयर इज अ सफिशिएंट गैप इन बिटवीन, इनके बीच में एक परफेक्ट गैप है, देयर इज सफिशिएंट गैप, एंड इन दिस गैप वी कैन सी डिस्क और इंटरवर्टिबल डिस्क। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क, बिनो स्लिप डिस्क, डिस्क herniation, disk desiccation. There are many problems happening here in the disk. So this gap, we can see all the vertebrae looking very nicely like a quadrangle. कितनी बढ़िया तरीके से बनी हुई है. All the vertebrae are very well arranged in the normal condition. We can see very well arranged. But when the pathology happening, these vertebrae are not arranged like this. So let's see here. Now, if we look at the all the vertebra from the front side, अगर हम आगे से देखें तो ये बॉडी है, आगे क्या है, बॉडी है. So let's see here. Suppose this is the body of vertebra. इसके आगे ये बैंड क्या है? What is the name of this band? Very important band. ये क्या चीज है? What is this? So now we can see this is the band in the front part. ये आगे की तरफ जो बैंड है, this is a very big ligament. ये पूरा एक बड़ा ligament है. We can see this is the ligament. So now remember the name of this ligament. This ligament is called the ligament of anterior side. Okay. So we can tell anterior ligament. But this ligament is very long. ये बहुत ही लंबा है. Then we can tell longitudinal ligament. Longitudinal ligament. So in the short we are telling ALL. So where is the ALL? The anterior longitudinal ligaments play very much important, right? Because it's in the anterior part of the vertebral body. ये हमारी vertebral body के आगे की ओर है. So now when we are doing extension, जब हम अपने ट्रंक को पीछे ले जाते हैं ऐसे, suppose anterior longitudinal ligament somewhere here, I am doing extension of the trunk. अब देखिए मेरा लिगामेंट ये पुल होगा. This ligament will be pulled. I am doing extension. This ligament will be pulled. Now it will restrict more extension. ये restrict कर देगा, right? So when we are doing this movement, this ligament will allow only some movement till the limit. So, and this ligament is very strong ligament. Many persons are having weakness in this ligament. जब तक ये लिगामेंट आपका मजबूत है, जितने भी लिगामेंट मजबूत हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. There will not be any problems. People are suffering with the problems when they are having weakness in these ligaments. जब इस लिगामेंट में कमजोरी होगी तभी बीमारियों की शुरुआत होगी, राइट? फाइन. सो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट और ALL वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है ALL और द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एंड इट विल नॉट अलाउ एक्सेसिव मूवमेंट. अगर ये लिगामेंट कमजोर हो गया तो पूरा गोल घुमा दो पूरी बॉडी, यू कैन डू इट.
कितना भी एक्सटेंशन, कितना भी सिर को पीछे चक्रासन से भी ज्यादा जा सकते हो. Like you can turn your body back. No one is pulling to the front side. So now this ligament play a very important role. So let's see here in this image. यहाँ पर देखिए. So when we see the इंटरवर्टिबल डिस्क, जब हम इंटरवर्टिबल डिस्क की बात करते हैं, so we can see the upper vertebral body and the lower vertebral body. In between we have intervertebral disc. इनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क है. इट शुड बी गुड एंड थिक. जो डिस्क है उसकी थिकनेस अच्छी होना चाहिए. तो क्या होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्क? डिस्क का रोल क्या है? डिस्क विल डू शॉक एब्जॉर्प्शन. लाइक इट विल बी वर्किंग लाइक ए सॉकर. हमारी कार में, हमारी बाइक में जो सॉकर होते हैं, तो क्या होता है? दचका आया तो भी हमें नहीं लगेगा. You know what is the difference between very expensive car and the less expensive car? You know, very expensive car. In the very expensive car, maybe you are keeping your 1 glass water, and you are that the same 1 glass water you are keeping in the some less expensive car. You can see lots of movement. By seeing the movement, because suspension are very good in the expensive car, so movement कम होगी. You will sitting inside, but you are feeling very comfortable. Shock absorption. In the same way, the disc are, if you are very wonderful body, you are having very wonderful body, we can tell you are very expensive person. Means if you are having wonderful disc, means you are having wonderful suspension, you are having wonderful shock absorber quality. अगर आपकी बॉडी बहुत ही शानदार है, आपके सस्पेंशन अच्छे होंगे, so the disc is like doing the suspension. So slowly what's happening? Disc is made by many things. Disc is made by some things I will discuss. Slowly, disc is getting degenerated and people are getting the problem. So now look at here. There are 3 main structure in the intervertebral disc. जब भी हम डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क के अंदर मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर होते हैं. There are 3 structures are the main in the disc. The structure number 1, the center part of the disc, that is called nucleus pulposus. The structure number 2, outer part of the disc, that is the second one, annulus fibrosus. और तीसरा जो होता है वर्टिबल एंड प्लेट. चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं. Let's see here. So suppose this is the disc, the middle disc. The outer part is little strong. ये जो बाहर का पार्ट होता है ये काफी स्ट्रांग होता है. And the inner part is very soft like a gel. जैसे एलोवेरा जेल होता है ना, ऐसा. The inner part is like a gel. So the outer part is tough.
Inner part is like a gel. So the inner part is called nucleus, pulposus. और आउटर पार्ट को हम कहते हैं रिंग. सो एनुलस रिंग, एनुलस रिंग. बट आउटर पार्ट इज वेरी टफ. जब कंप्रेशन होगा, इस पर जब कंप्रेशन होगा तो ये थोड़ा फूल ऐसा होगा. सपोज दिस इज द नॉर्मल डिस्क. समटाइम ड्यू टू द कंप्रेशन this is becoming like this. Sometimes it's becoming like this. But still it will be living inside. So when there is a more water, it's becoming like this. Or when there is less water, it becomes like this. And also it's changing the shape as per compression. चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात. आपको क्या लगता है, क्या डिस्क का साइज घटता बढ़ता है? व्हाट डू यू थिंक? Whether the size of the disk increasing or decreasing? So the answer is yes. When we are sleeping during the night, in the morning our height is little higher, and throughout the day, at the end of the day, our height is decreasing. Why? Because when we are sleeping, I'm not telling as per the age, I'm telling daily, to like with everyone. Suppose today I'm sleeping. In the night, my disk will absorb more water and disk will be becoming bigger. You can measure, you can do this experiment. In the morning, if you measure the height of the person, the height will be little more. Then during the daytime, we are working, we are walking, we are doing lots of activity. So due to the compression, the disk size is reducing. So disk is also changing, right? You have done it? Yeah, it's true. So in this way, the disk need nourishment. Disk needs some water. Disk को भी nourishment चाहिए, disk को भी water चाहिए. When disks are under the continuous stress, then disk सूख जाती है. जैसे पेड़ की पत्तियां सूख जाती है ना, ऐसे डिस्क भी सूख जाती है. That is called desiccation. डिस्क का सूखना, desiccation of the disk. So when the patient is bringing the report, in the medical report, we can see desiccation of disk. Okay. In the MRI, we can see the desiccation of the disk, right? In the report, it's mentioned. So now I am showing you one X-ray. अब आप ये एक MRI देखिए. Let's see one MRI. Look at this. ये देखिए. We can see the very beautifully quadrangle vertebra. हम देख सकते हैं कि vertebrae कितनी शानदार हैं, पूरे चौकोर हैं, quadrangle हैं. Okay, but we are going in the bottom. Can you see this? Here we can see in the back side. Now we can see there is an uneven. So here, if you see the width of the disc, अगर आप डिस्क की width को देखें, on the one side the disc width is high, on the back side disc width is low. This is called desiccation. इसे हम क्या बोलते हैं? Desiccation. In the report also you will see this, the desiccation. So desiccation is the condition when disc is getting dry. जब disc सूखने लगती है,
तो हम उसे डेसिकेशन कहते हैं। यू कैन सी इन द स्कैन व्हेन पेशेंट आर प्रेजेंटिंग द स्कैन टू यू, जब पेशेंट आपको स्कैन प्रेजेंट करता है, रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, यू कैन सी द डेसिकेटेड डिस्क, राइट। So, the nucleus pulposus is the central part of the disc. Annulus fibrous ring is the outer part of the disc. And what is the vertebral end plate? Vertebral end plate ऐसी होती है कि सपोज दिस इज वन डिस्क, ये हमारी एक डिस्क है। सपोज दिस इज द वन वर्टिब्रा, ये हमारी एक वर्टिब्रा है, राइट। एंड दिस इज द अनदर वर्टिब्रा, ये दूसरी वर्टिब्रा है। इन बिटवीन वी हैव डिस्क, इनके बीच में ये डिस्क है, दिस इज द डिस्क, राइट। सो नाउ डिस्क इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, यहां पर वर्टिबल एंड प्लेट होती है, वर्टिबल एंड प्लेट हियर, इट इज गिविंग प्रोटेक्शन। इसके ऊपर वर्टिबल एंड प्लेट होगी, फिर दूसरी वर्टिब्रा होगी। सो इन दिस इमेज वी कैन सी हियर, यहां पर हम देख सकते हैं कि वी कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द वन वर्टिब्रा, देन दिस द end plate, then this is the disc. So vertebral end plates are very much important to provide protection. So now again we can see this is the central part और it is called nucleus pulposus, जिसे हम nucleus pulposus भी कहते हैं, the central part of the disc. The nucleus pulposus, how many percent water is having? Can you see this? कितने परसेंट वाटर दिख रहा है आपको, बताइए। It's a 70 to 90% water. But if you see the in the annulus fibrosis, अगर आप उसके बाहर की रिंग में देखें, how many percent water? 60 to 70% water. So now you can imagine the nucleus pulposus. This is the material who is coming out during the slip disc. जब भी किसी को स्लिप डिस्क होती है तो यही तो निकल कर आता है बाहर, you know that? I will show you here. सो न्यूक्लियस पल्पोसस, अब मान लो किसी का एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक हो जाए यहां से, सो द न्यूक्लियस पल्पोसस इज कमिंग आउट एंड क्रिएटिंग द स्लिप डिस्क. So we can see collagen and there are many other things are there, proteoglycan, and but the till the 90% water in the nucleus pulposus. और इसके जो बाहर की रिंग है, द रिंग अराउंड एनुलस फाइब्रोसिस, the 60 to 70% water, again collagen and the proteoglycan. And this is the vertebral end plate. ये ऊपर की तरफ वर्टिबल एंड प्लेट है, नीचे की तरफ भी वर्टिबल एंड प्लेट है. सो दिस इज द वर्टिबल एंड प्लेट. वर्टिबल एंड प्लेट देखने में कैसी होती है? कैन यू सी योर नोज? नोज इज वेरी सॉफ्ट. वी कैन सी nose is very soft and nose is made by cartilage. Ear is very soft and ear is also made by cartilage. कान भी सॉफ्ट है, कार्टिलेज से बना है. ऐसी एक प्लेट रख दो ऊपर. सो वर्टिबल प्लेट इज लाइक दिस. सो वर्टिबल एंड प्लेट यानी एक वर्टिब्रा, फिर आपने रखा जैसे ये आपका डिस्क, फिर यहां पर वर्टिबल एंड प्लेट यानी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर, देन अदर वर्टिब्रा. So the main three structure, nucleus pulposus in the center, annulus fibrosus, so fibrosis around,
vertebral end plate, upper and lower part, right? This is the end plate. We can see in this image. Now, डिस्क को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? डिस्क में नर्व भी आती हैं. We will discuss this thing, but disc is not receiving too much nutrition. Disc is receiving the nutrition. इसे इतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. Now directly I am coming to this condition. I told you earlier the anterior longitudinal ligaments हमारे स्पाइन के आगे पाए जाने वाला. In the spine we are having 6 main ligaments. These all the ligaments are providing the stability to the spine. ये सारे ligament हमारी स्पाइन को stability provide करते हैं, right? So again I will show you this image here. Now look at here, the very important ligament. Out of 6 ligament, this is the very important ligament which is called anterior longitudinal ligament. We can see here. ये आगे की ओर, right? Then we can see the body. फिर हम देख सकते हैं कि वर्टिब्रा, और जहां पर वर्टिब्रा खत्म होगी पूरी, ये we can see the vertebra is ending here. एकदम पीछे की ओर vertebra is ending here, right? So now we are going inside the vertebra. हम vertebra के अंदर जाएंगे and we'll see here. So this is the ALL, anterior longitudinal ligament. So on the one side we have one ligament, because this ligament on the anterior side, so we are telling it anterior longitudinal ligaments. And another ligament on the other side of the body, जो पीछे की तरफ है, उसे क्या कहेंगे? पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. थोड़ा फास्टर हो रहा है क्या? इज इट क्लियर? नो? ओके. So look at here now. Okay. So look at this vertebra. ये हमारी vertebra है, right? Now you have to tell me. I am writing 2 points. A means anterior, A and B. Can you tell me which is the anterior side? If you are looking one vertebra, can you tell me which is the anterior side, A or B? इसमें से anterior side कौन सी है? Yes, right. This is the anterior side, A. And we are looking from the back side. This is the back side. B means back side or the posterior side. So when we see the body, this is the body. Can you tell me what is the name of this?
ये जो साइड में निकले हैं इनका नाम क्या है? ये जो साइड में निकला इसका नाम बताइए। What is the name of the structure in the side? Tell me. The structure in the side. And what is the name of the structure who is in the back side? जो पीछे उसका नाम क्या है? जो साइड में है उसका नाम क्या है? और जो पीछे है उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? What is the name of this? And what is the name of this? On the back side, this is the spinous process. On the side, this is the transverse process. चलिए, what is the name of this structure? इसका नाम क्या है? ये, what is the name of this? So this is the body of the vertebra. ये वर्टिब्रा की बॉडी है. What is the name of this hole? इस होल का नाम क्या है? What is the name of this hole? Yes. The name of this hole is foramina, vertebral foramina. Vertebral foramina. ये vertebral foramina है. Okay. Now, so we know this is the spinous process. ये हमारा spinous process है. I will ask you two more questions. Spinous process connected by which part? What is the name of this part? Who is connecting spinous process with the rest of the vertebra? जो spinous process को rest of the vertebra से connect कर रहा है, इसका नाम क्या है? What is the name of this structure? That is lamina. Lamina. The last question. This is the body. Who is connecting body with the rest of the structure? ये जो बीच का भाग जो बॉडी को रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? पेडिकल. ये सब हमने कल समझा था. नाउ टेल मी, स्पाइनल कॉर्ड पास फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द वर्टिबल फोरामिना, फ्रॉम द साइड? कहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी? फ्रॉम विच पार्ट स्पाइनल कॉर्ड विल बी पासिंग? द आंसर इज राइट. From this foramina, vertebral foramina, spinal cord is passing. So these are the structure now. Now, if we look at the vertebra from the anterior side, हम ऐसे देखेंगे इसको. So this is the back part of the vertebra, and there are many vertebra. One, then second, then the third, then the fourth. This is the anterior part of the vertebra. तो यहाँ पर anterior है. So here is one ligament in the full length. और इसके पीछे भी एक ligament है in the full length. In the anterior side of the body and in the posterior side of the body, there is a ligament. The anterior side is called anterior ligament, and the posterior side is called posterior ligament. Posterior longitudinal ligament, and this is called anterior longitudinal ligament. ALL, PLL. Anterior longitudinal ligament and the posterior longitudinal ligament. Why we are discussing these all? क्यों समझ रहे हैं? I will show you one imaging.
मैं आपको एक इमेजिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आपको बताना है कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहाँ पर है और पोस्टीरियर कहाँ पर है। यू हैव टू टेल मी इन दिस रिपोर्ट। एंटीरियर कहाँ दिख रहा है आपको? एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। कैन यू सी? कैन यू सी दिस एंटीरियर longitudinal ligament? In the anterior side of the vertebra and the posterior longitudinal ligament on the posterior side of the vertebra, एक आगे है और एक पीछे है। वर्टिब्रा के एक आगे एक पीछे है, राइट? तो क्यों है ये लिगामेंट, क्यों है? सोच के बताइए कि पोस्टीरियर longitudinal लिगामेंट कब खींचेगा, कौन सी मूवमेंट में खींचेगा? विच मूवमेंट विल डू देन देयर विल बी पुलिंग ऑफ द पोस्टीरियर longitudinal लिगामेंट? कौन सी बेंडिंग? फॉरवर्ड बेंडिंग। अब बताइए। वन लिगामेंट ऑन द बैक साइड, वन लिगामेंट ऑन द फ्रंट साइड, एक पीछे एक आगे है। आई एम डूइंग वन मूवमेंट, अब मैंने ये मूवमेंट की, आगे का खींचेगा कि पीछे का? विच लिगामेंट विल बी स्ट्रेचिंग? फ्रंट और बैक लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट स्ट्रेच होगा? आप एक रस्सी पकड़ के देख लो। सपोज दिस इज द वायर, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है ना? ये पीछे की ओर। इफ आई एम स्ट्रेचिंग, पुल इज कमिंग। Okay, this is the posterior longitudinal ligament. Now, if I this is the posterior longitudinal ligament, if I am stretching, you can see pull is coming. So when I bend my body, it will restrict my movement. In the same way, there is anterior longitudinal ligament in the front side. When I am taking my body to the back side, see, stretching. So these all stretch happening on your spine. तो जब ये लिगामेंट कमजोर होते हैं, लिगामेंट इज लाइक, जैसे हम कभी पिकनिक मनाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? वो टेंट गाड़ते हैं, उसमें रहते हैं अंदर। सो वी आर टाइटिंग द टेंट विद द हेल्प ऑफ रोप्स, राइट? इफ रोप आर लूज, व्हाट विल हैपन? वी आर टाइटिंग द टेंट विद द हेल्प ऑफ रोप्स। रस्सियों से हम टेंट को गाड़ते हैं, बांधते। इफ द रोप्स आर not strongly holding the tent, tent will fall down. In the same way, ligaments should be strong. Then you will be jumping. Sudden jerky movement. But ligament will be providing restriction. So we are going in the car and suddenly some jerk. But ligament will hold your position. Otherwise, there will be slip disc. There will be one vertebra will be here, one vertebra go back side. Suddenly someone is falling on the back side. If ligament is not there, what will happen? Then your one vertebra वहां से निकलकर
थोरेसिक वर्टिब्रा को धक्का लगा, पीछे हाथ के अंदर चली गई, है ना। सो लिगामेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Ligament provide restriction, which is very much important. And for the spine, there are 6 ligaments are very much important. The two anterior, one is the anterior longitudinal ligament, one is the posterior longitudinal ligament. Can you tell me which ligament will be stronger? इन दोनों में से ज्यादा मजबूत कौन होगा? What do you think? कौन सा ज्यादा मजबूत लगेगा? Anterior or posterior? When people are suffering with the more problems, when bending anterior or when bending posterior, which ligament is? Because if you are doing anterior bend, posterior longitudinal ligament is providing restriction. But if the posterior longitudinal ligament is not strong, then you will suffer with the problem. आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. So which ligament is stronger? What do you think? मूवमेंट करके फील करो कौन सा लिगामेंट मजबूत है. डू मूवमेंट एंड फील. और लोगों को उसी की ज्यादा प्रॉब्लम होती है. सो आई विल टेल यू, द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट इज वीकर. ये कमजोर होता है, राइट. अब बताइए कि जब पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कमजोर है तो कौन सी मूवमेंट ज्यादा रिस्की है? विच मूवमेंट इज मोर रिस्की? द फर्स्ट मूवमेंट इज मोर रिस्की or the second movement is more risky for the spine, because this is who is holding. Posterior longitudinal ligament is holding, but it is weak. It will not able to hold too much, but you are doing too much, sudden jerk. So it will not able to hold, and person will suffer with the herniation of the disc. So that's why when the patient of the back pain is coming to you, what we are telling, don't do forward bend. We are telling na, आगे मत झुको, because we know he's having weak PLL. He's having poor posterior longitudinal ligament. That's why we are telling for the patient suffering with the lower back pain, don't bend anterior. आगे मत झुको. Right? And we are also telling, okay, do the backward bending asanas. कहते हैं ना कि ये वाले आसन करो जिसमें पीछे की ओर मुड़ना हो. Why? Because we know the anterior is strong. There is no problem. Anterior is strong. Now anterior longitudinal ligament in the action. So you have to remember very clearly the which ligament is weaker. कौन सा ligament कमजोर है आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. Which ligament is weaker? ALL or PLL? PLL. Very good. PLL is weaker. ठीक है. Fine. So slowly we will be discussing other ligament also, because there are total 6 ligament. If you want to do the treatment of the spine, you will see the MRI, you will see the report of the patient, and you will understand, oh, this person is having this problem because this ligament is poor. So we'll be discussing all the 6 ligaments, anterior and posterior be discussed, but there are 4 more, right? We will also discuss them. Then during the different movement, the different ligaments are in the action.
Okay. So we'll continue the discussion tomorrow. Thank you so much. Let's close the session. Om Kalmling. Thank you.